Hello students, now we are going to start exercise 1.3 of chapter 1st real number. Chapter 1.3, in this exercise we will discuss irrational numbers. Firstly, you should know what are irrational numbers. We learned this in the previous class, irrational numbers. Irrational numbers are those which are the square root of prime numbers. Clear? First definition is square root of prime numbers. For example, you can say root 2, root 3, root 5. These are irrational. Root 4 is not irrational number because 4 is not a prime number. Clear? So these are called irrational numbers. Second definition of irrational number is non-terminating and non-repeating numbers. This is another definition of irrational numbers. Non-repeating and non-terminating. For example, 1.2, 3, 5, 7, 0, 9 and so on. This number will not terminate and this is also not repeating. This is called irrational number. Clear? Now in this exercise we have to prove that square root of prime number is irrational number. So see the criteria how to prove this is irrational number. You can say root 2, root 3, root 5. How to prove these are irrational numbers? Let's start the exercise. First question, prove that root 5 is irrational. So we will start this question from the contradiction. Let us suppose that root 5 is a rational number. So we will prove it with the help of contradiction. Rational numbers are those which can be written in P by Q form, where P and Q are co-prime. Co-prime means to say HCF of P and Q is 1 and Q is not equals to 0. We will suppose root 5 is rational. Rational can be written in P by Q form. What is the condition over P and Q? P and Q are the co-prime, means to say their HCF is 1 and denominator should be non-zero. Now cross multiply. Root 5 into Q is equals to P. First step is cross multiply. Second step, squaring on both sides. Squaring on both sides. So root 5 square is 5. This is Q square. This is equals to P square. Squaring both sides. So from here we can say 5 divides P square. Here 5 is completely divisible by P square. What is the meaning of this form? Dividend equals to divisor into quotient and remainder is 0. See here, P square is equals to 5Q square. Means to say dividend equals to divisor into quotient plus remainder. There is no remainder, so remainder is 0. It means to say P square को हम 5 से डिवाइड कर दें तो रिमेन क्वोशंट Q square है और रिमाइंडर क्या है 0. इट मीन 5 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है P square को. 5 डिवाइड्स P square कम्प्लीटली. अगर P square को डिवाइड कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं P डिवाइड्स P. So P is multiple of 5. Only then P is completely divisible if P is a multiple of 5. There is one multiple. Either P is 10, 15, 20, 50, 100. P can be any number. But the multiple of 5. Now we will put this value in first equation. From first equation, 5Q square as it is. Instead of P we will write 5M square. Squaring on both sides 25M square. Clear? Now 5 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा? Q square is equals to 5M square.
Again same thing. Now q square is your dividend, 5 is divisor, m square is your quotient. So we can say 5 divides q square. Q square is equals to 5m square. So we can say 5 divides q square, or you can say 5 divides q. Then q is multiple of 5, so you can write q is equals to 5. See, p is equals to 5m, q is equals to 5m. So what is the LCM of p and q? 5 is a common number, but at the starting we suppose this is rational number and p and q are co-prime, means to say HCF is 1. But here we proved HCF of p and q is 5. So our supposition is wrong. Root 5 is irrational. Clear? So this is the complete procedure to prove any irrational number. I will repeat the same procedure. Firstly, you have to suppose this is a rational number. It is a rational, so we can write it in the p by q form. Condition over pq. This is very important. So you have to write down this condition. This is important. If you will not write down this, then what will we are proving? Nothing. So you have to suppose that these are the co-prime. HCF is 1. Then cross multiplying. Second step, squaring on both sides. It means to say 5 divides q square according to your dividend divisor rule. Then 5 divides m. अगर 5 m को डिवाइड करें तो p क्या होगा? 5 का मल्टीपल. तो ये वैल्यू वापस फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे. इसके बाद क्या बचा? q square is equals to 5m square. It means to say 5 divides q square, 5 divides q. Then q is multiple of 5. So HCF of PQ is 5. But हमने लेट क्या किया? PQ का HCF 1. So our supposition is wrong. It means to say हमने जो लेट किया था रैशनल वो गलत है. रूट 5 क्या होना चाहिए? इरैशनल. क्लियर? तो ये सेम प्रोसीजर आप किसी भी नंबर के लिए कर सकते हो. तो इसके बाद आपको करना है ये खुद प्रूव दैट रूट 2 इज इरैशनल, रूट 3 इज इरैशनल. ये दोनों नंबर का प्रूफ आपने इस क्वेश्चन के बाद अपनी नोटबुक्स पे करना है. क्लियर? रूट 2 इज इरैशनल, रूट 3 इज इरैशनल. अब ये तो था हमारा अगर सिंगल नंबर आए. अब इसके बाद हम करेंगे जब दो नंबर्स आ जाए. क्लियर? देखो सेकंड क्वेश्चन कैसे आ जाए, तो कैसे प्रूव करोगे उसको. हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरैशनल. वहां तो सिंगल नंबर था रूट 5, हमारे पास एडिशन भी है, 3 के साथ एडिशन भी है और 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन भी है. तो इस नंबर को कैसे इरैशनल प्रूव करना है? सेम प्रोसीजर है. स्टार्टिंग में लेट दिस इज रैशनल नंबर. रैशनल नंबर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? p by q फॉर्म. व्हाट इज द कंडीशन ओवर p and q? p and q are co-prime. HCF of PQ is 1, Q is non-zero. क्लियर? ये तीन कंडीशन लिखनी ही लिखनी है. इसके बाद 3 को हम उस साइड शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 2 रूट 5 इज इक्वल्स टू p by q माइनस 3. 2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा. अगर 2 डिवाइड होगा तो ये p के नीचे भी आएगा और 3 के नीचे भी आएगा. ठीक है? दोनों के नीचे आएगा ये 2 नंबर. सिर्फ इसके नहीं लिखना, p के नीचे भी. क्लियर? अब देखो p by 2q and 3 by 2, ये दोनों नंबर्स क्या है? p by q फॉर्म की है. देन बोथ नंबर्स आर रैशनल. दोनों रैशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू योर क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है? दो रैशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर. दिस इज योर क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी.
क्लास में पढ़ी थी। क्लोजर प्रॉपर्टी, subtraction of two rational numbers is rational, मतलब इन दोनों को सॉल्व करके आंसर में क्या आएगा, रैशनल। न्यू नंबर आएगा, न्यू रैशनल नंबर हम क्या लेट करेंगे, a/b। तो मतलब हमारे पास क्या बच गया, √5 = a/b। क्लियर? तो मतलब ये रैशनल है, √5 क्या हो गया, रैशनल। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, अब डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स में आ रहा है पेपर में, या फिर 3 या 4 मार्क्स में आ रहा है। नाउ अकॉर्डिंग टू योर मार्किंग स्कीम वी विल प्रोसीड फर्दर। यहां तक तो आपने स्टार्टिंग में करना ही करना है। अब देखो, अगर ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया तो हम क्या करेंगे, लिखोगे बट √5 is irrational, a/b is rational, but this is not possible. So our supposition is wrong. Supposition is wrong. 3 plus 2 √5 is irrational. ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि रैशनल और इरेशनल आपस में इक्वल नहीं हो सकते। रैशनल रैशनल के ही इक्वल होगा, इरेशनल इरेशनल के ही इक्वल होगा। दैट्स व्हाई दिस कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। अगर आपका क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है तो आपने ये करना है, स्टार्टिंग ये यहाँ तक, इसके बाद ये लिखना है, वी नो दैट। अगर ये क्वेश्चन आपका ज्यादा मार्क्स में आता है तो कैसे करना है आपने, तो यहां तक से इसके बाद जो आपका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन करवाया था, पूरा प्रूफ दिया था √5 का, तो इसके बाद आप पूरा प्रूफ दोगे √5 का कि √5 इरेशनल है। यहां तो मैंने स्टार्ट लिख दिया, वी नो √5 इज इरेशनल। वहां पे अगर ज्यादा मार्क्स में आए तो आपने कंप्लीट प्रूफ करना है √5 इज इरेशनल। इसके बाद कंक्लूड करोगे आप दिस इज इरेशनल। क्लियर होगी? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर आपका सिंगल नंबर आता है तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे किया था वैसे ही करना है आपने, चाहे वो 2 मार्क्स में आए, 3 में आए, 4 में आए, तो आपने पूरा प्रोसीजर वही देना है। अगर ये वाला क्वेश्चन 2 और 3 नंबर्स वाला आता है तो आपने स्टार्टिंग यहीं से करनी है। 2 मार्क्स में आया तो सिंपल इतना सफिशिएंट कर दोगे, सम अप कर दोगे। अगर ज्यादा का आया तो पहले आपने इसके बाद पूरा फर्स्ट क्वेश्चन का प्रूफ देना है, इसके बाद कंक्लूड करोगे दिस इज इरेशनल। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ जी, थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। स्टार्टिंग कहां से करनी है, लेट 1/√2 इज रैशनल। रैशनल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p/q है। यहीं पे रेसिप्रोकल ले लो इसका, q/p। इसके बाद आपने सारा प्रोसीजर वही देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहाँ पे कंडीशन लिखनी है सारी। क्या कंडीशन है, p and q आर co-prime, q is not equals to 0, HCF of p and q is 1। सेम कंडीशन होगी, p and q आर co-prime, HCF of PQ is 1, Q is not equals to 0। अब यहाँ पे रेसिप्रोकल ले लिया है तो P भी not equals to 0। क्लियर? इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, देन 2 डिवाइड्स Q square, 2 divides Q, so Q is multiple of 2। Now put this value in first equation, 2p square is equals to 2m square, so it will become 2p square is equals to 4m square। 2 इस साइड आके डिवाइड होगा, p square is equals to 2m
by 2n here. So it means p और q का HCF क्या हो गया? दोनों में कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है? ये 2m है या 2m है, तो कौन सा नंबर कॉमन है? 2. बट स्टार्टिंग में क्या लेट किया था? उसका HCF 1. So our supposition is wrong. 1 by root 2 must be irrational. Clear? सारा सेम प्रोसीजर है आपका फर्स्ट क्वेश्चन में. हाँ जी, सेकंड और थर्ड पार्ट है इसका 7 रूट 5 6 प्लस रूट 2. ये दोनों क्वेश्चन आपने अपने आप करने हैं. क्लियर है? दिस इज योर कंप्लीट एक्सरसाइज 1.3 हाउ टू प्रूव नंबर्स आर इरेशनल. अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो. ठीक है.